baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't want to, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. All nice. Paradise is wherever we make it. AC to 79. Paradise is wherever we make it. Do you hear that? My sanity about. Hello. Welcome all. Welcome back to the stream. Yesterday was a legit fun stream we had, and today we are back with the LeetCode now. So I was looking into this number of provinces question that we solved yesterday actually, but one of the subscribers said, one of the person in the chat said actually this is not the exact way, so I have got the exact code. This function is something apparently different than yesterday that we have solved, so I have to understand this part. To be honest, I haven't found any better video in Java which is explaining this concept, so I'm like really frustrated now, and hence I thought I'll just get the code from ChatGPT and समझ लेते, बाकी बाद में देखेंगे. Okay, so let me post this on Discord that we are live. Anybody wants to join? Okay, so today we'll And what we do is watch his we video. use something as a visited array. Now we see there are 8 nodes, so we will create a 9 size visited array. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it's like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfect. We have created a 9 size visited array and we mark everyone as false. And this is known as the visited array. Done. Now what we do is we say, okay, let's for int I equal to 1, because we know the numbering of nodes start from this to v or n, and we say, hey, listen, if visited of I is equal to 0, or that equal means to it has equal not to been 0. visited, can you call the DFS from this node? This is what either of them. It says, okay, This person really confuses many a times. You know, the point is we want to solve this using DSU, but he haven't said he is gonna do it using DSU. I'll consider 1 as the starting point. It will go to DFS 2. Next, now it is called for 4. Now when it is called for this after this term will be 8, and it will not find it, then it will be 9, and the for loop will be over. Another ways is either you create your adjacency matrix. So this is the array at the end, because most of the problems adjacency list will be case can, so it will just be once for here, once for here. Let's call for this as well. So you know throughout, because near about the nodes, so we go fun channel what I'm going to do. So I Shit. Video.
I want to see this in Java. There is apparently no Java video. Number of islands, LeetCode, Python is, this guy is in Python. Number of provinces, graph problem, number of islands, number of provinces, disjoint set. And disjoint set is something I want, but hopefully Hey it everyone, should welcome back be to in the channel. I Java. hope you guys are doing extremely well. So Is it in we will be Java? solving the problem number of provinces. So what does the question state? Given problem कैसे solve using कर रहा है the भाई? traversal techniques, because if you don't understand the data structure in depth and you're not conceptually clear, then it will be very tough to solve harder problems. So basically what this state is, they'll be giving you a graph like this, and the graph will be represented by an adjacency matrix. Okay, now if we see that between 1 and 2 there is 1, which means there is an edge between 1 and 7 and 6. Give me the real We will code. be having something like this. So if I talk about the disjoint set I don't want this shit. I want the exact solution. ultimate parent अबे चलना. will be my answer, because one based, and whereas you can go from 1 to n if it's a one based indexing graph. Can I say this? I definitely can. I bang. यार ये मैं भूल जाता हूँ. It should be automatically done. Let me do this. Stream. New window. YouTube file कहाँ है? YouTube file, yes, YouTube file. And stream goal, stream type is LeetCode. LeetCode, and goal is to एक सेकेंड. Understand and solve graph questions using DSU or union find. Union find we understood. Okay, so union find we understood. Let me refresh this and let me show you. Yeah, LeetCode is better, but koi bhi, there is no video explaining this particular thing. Because the bosses is what I need. Because the number of bosses will always be equal to the number of connected components. Got it? So I hope you understood how to use the disjoint set data structure. No. So before starting the solution, let's take our template. This is our code snippet, just in case you haven't seen our Disjoint set, this is C++, bro. This is C++. previous videos. We have the union by size was matrix, which is quite simple. Whichever you get, that equal to 0. I lesser than this, then I can just return a count. What it's A lot of people doing. might think, no need to go to recursion to find the ultimate parent. We can use the parent array directly as well. Yes, you can use it. Okay. Just declare these guys under this, and once you've done this, I think like you just need to make sure that ds dot parent and compile. Using the parent also works to this portion. To be honest, I really don't find his videos useful. So- He's very popular, but मेरे को इसके videos में समझ, he's like really confusing, really confusing. Yeah, this guy is better. Pointer variable. The topic is disjoint This is a legend. operations have a not Yeah, I understood. I know this. I know this part. cycle. I know this part. And I food. know. Confirm you. I know. It will not Let me. I know this, sir. Sir, teach me, sir. This, not this. Yeah, this part I want to full know. nodes are there. So weight of this set is more and this weight is less. So we will make this as parent and I don't want is this. same thing again. And the indices are equals perform the same thing.
1 comma 2. 1. Who is the parent of 1? Minus 1. Itself. 2. Find 2. Go to index 2 and see what is there. Minus 1. So who is the parent of 2? Itself. So how much time it has taken for finding 1 and finding 2? Find 1. It's minus 1. Find 2. It's minus 1. So constant time. All of that I will remove. So who should become parent are same. 6. Now what about 8? Find 8. In this graph you can see that's it. Now the last one are sufficient. We have Sorry, sir, but you have failed me today. Number of connected components in undirected graphs, set and union join. This is in C++. Are there no videos really? Like, is there a scope for me to learn and create videos on this one? Number of provinces, LeetCode, union find, Python. Give me something in Java, na? That's why I was referring to ChatGPT. Bloody hell. So let me understand this, what ChatGPT is given. This is fine. Root A, root B. Okay, then if root A is equal to root B, then directly return. Kunal Kushava का वीडियो है क्या कुछ? Let me find this. By Kunal. Kushwaha. Java plus DSA interview course. Okay. Which video I want from this? Is it one video? क्या हो गया? How do I find Disjoint Set? Disjoint Set by Kunal Kushava. Show me. अबे यार कोई लिंक दे दो यार मेरे को. If I go to his Mukesh Gupta, where is Kunal? Hey, why the same photos are there? Videos, and if I go and search for DSU, this channel don't have anything. Union, this channel doesn't have anything. Union find भी नहीं होगा इसमें. There are no videos on this. He has a playlist on Java DSA का, check it. किसी और लैंग्वेज में देख के सुडो कोड देख लो if exact प्रॉब्लम चाहिए. मैंने DSA स्टार्ट करना है पर दिमाग खराब होता है. No, that's why I was able to write the code using ChatGPT. This is the alteration that ChatGPT did. The rest of the things were same. I understood this part. So see, I understood this. I just have to repeat this pattern till the time I get efficient in this one. So I have that much of understanding now. Find circle num. What the fuck is this function name? Circle num. Is connected this length. I got the parent. I got the size. Okay. This is something new in this pattern. So I haven't used this. This is ChatGPT. What ChatGPT has given initially, every node is its own parent and every set has one, size 1. Okay, this I understood, this I didn't. And then for it is a adjacency list, so we can iterate like this because it's kind of क्या बोलते इसको ऐसा. It's like this. It's like this 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.
100 like this. It is code story with MLK. I'm not sure. कोई नहीं, खुद से ही फिगर आउट करते हैं भाई. No issues. This is what I like. Figuring out by yourself. Let me finish the coffee. बहुत ही अच्छी बनी है कॉफी यार. वाह, मजा आ गया कॉफी पी के. थोड़ा सा म्यूजिक चाहिए बैकग्राउंड में ना, एकदम हल्का सा. मेरी आवाज ठीक से आ रही है? Am I audible properly? Yeah, I guess yes. Code with ML. I'm done searching the people though, because I wasted so much of time in that. Better I have this debugger option. I can debug it, I can understand the flow, and we can solve the next question. I have my own list of the questions that I need to solve. Let me open that as well. Here it is, the list. It is the God's plan. I have solved these many questions. I don't give a fuck about other people. क्या बेंचुट कौन सा लिस्ट क्या बता रहे, मेरे को मेरा खुद का समझ में आता है. रिडंडेंट कनेक्शन इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेगी रे बाबा इनिशियल में. नंबर ऑफ प्रोविंसेस कहाँ गए आपका क्वेश्चन? नंबर ऑफ प्रोविंसेस number, yeah. Then next is keys and room, or maybe number of islands would be a better question over here. So let me go open it in new tab. I'm sorry. Number of islands. We have solved this using BFS. DFS does it also. Yeah, union find. It can be solved using union find. So this one we can do. Then flood fill is an easier one. But flood fill honestly is not an easier question. We can give it a try. But let me understand this size wala concept. No, what is this size? Yes. Yes to what? Guys, do like the stream. You guys are first joiner, so you have to you have to like the stream. That is the मेरा chat मत पढ़ो history. So मेरे को ये चाहिए था कि बहन जो ये कोड एक्सप्लेन करे with all the comments. And guys, I was reading this book ना, मैं ये किताब पढ़ रहा था because I understood while doing yesterday's system design question that my core Java is still not good, because I compared it with my JavaScript skill, and while JavaScript I can understand each and everything how the code flow works, but Java I still didn't had that thing. So I started reading this book. मैंने आज ऑर्डर किया, and this is a really good book. तुम लोगों को पता ही होगा, but this is really nice. कोडिंग चल रही है क्या? नहीं बकचोदी चल रही है भाई. कोडिंग तो हम करते ही नहीं भाई. कोडिंग क्या होता है कोडिंग? Explain me the size parameter here. What's it doing? मैं भी वही करने आया हूँ. Then welcome bro, join us. Size stores how many nodes are currently in each DSU group. बेंचों पहले DSU का एग्जैक्ट लॉन्ग फॉर्म क्या है? डिसजॉइंट DSU ग्राफ फुल फॉर्म disjoint union, disjoint set union. So this is what it is, disjoint set union. And then build efficient data structure. ये सब बाद में समझेगा, पता है ये पहले नहीं समझ में आता है, because we just have started make set, find set and union set. ये find set है, B find set, B parent है. This basic algorithm I have understood. I have solved 2 questions based on that. So कहाँ this question we solved using the basic code. This one I can easily solve like this. So just let's focus now. ठीक है, this part I understood. Int size for
initially every node is its own parent, which is correct, and every set has size 1. Every set has size 1. This is something that I don't know. Size stores how many nodes are currently in each DSU group. Size stores how many nodes are currently in each DSU group. Size I1 because every node is alone. Oh, okay. So initially, okay, let me confirm this thesis. So initially, every node is alone in its eternity, right? Yes, initially every node is alone in its own set. Okay, so right now let me grab the example. ये बंद हो जाए पहले, इसको बाद में देखते हैं. This question. So it's connected. This is the input. Yeah. So we can write it like 2 ways. ठीक है, इसको दोनों वे से हम लिख लेते हैं ना, मतलब अपने दिमाग में छपे वो. How to do this? So this one. We'll use this. I hope this is visible to you guys. Code in COBOL. What is up? Nothing much, bro. Nothing much. Just trying to understand the DSU concept now, because I have completed basics जो भी था. I have completed all these questions in graphs. Using DFS, BFS, 4 direction traversal, diagonal traversal, all those things. Now it's time, and also I did cycle detection as well. Now it's time for union find and DSU. This is because this is a better way to solve graph problems, and this is what I'm trying to understand over here. So pen कहाँ गया eventually? Yes, here it is. 100 लाइक ज़्यादा नहीं हो गया? शुड बी 50. अरे देखो, मांगने के लिए वी कैन आस्क एनीथिंग, नो. सो कम क्यों मांगे? यू शुड आस्क यू वाई ओनली 100. यू शुड हैव सेड 1000, नो. पाइथन नहीं आती भाई, मेरे को कुछ नहीं आता, ना पाइथन ना कुछ. सो दिस इज 0, this is 1, this is 2. I'm guessing like this only. Okay, so but no, this question is like 1, starting from 1, not n minus 1. There are n vertices, some of them are connected while some are not. If a city is A connected to D. Okay, C, you are, I say to this 1 2 3. So this is 1 2 3, not 1 2 3, and this is 1 2 3 3 2 1, like this. Okay, do correct me if I'm wrong at some point. Okay, 1, and this is 2, this is 3, which is not connected. So am I right? Okay, I'm right. पाइथन नहीं आती, मैंने कुछ तो मिस किया क्या मैंने? So what it's trying to say, so with 4 nodes, let's run it step by step for this input. Okay, पूरा ही ना दे मेरे को ये ना, चैट जीपीटी पूरा ही देना, चाटना चालू कर देता है ये. अबे एक स्टेप बोला तो step by step means do 1 step at a time. So yeah, let me draw this first. This is 1 1 0, this is 1 1 0 1 1 0 and 0 0 1. Okay, this is how we can represent it. So 1 and 1 is connected to 1 itself, 1 is connected to 2. You guys can see this too? Arey, I can erase this. Oh, nice. 1 2 3. I can do this, no? 1 2 3. 1 is connected to 1, 1 is connected to 2, correct? 1 is not connected to 3,
2 is 1, this is 3 is connected to itself. So this is how it is. But initially it is saying every node is alone in its own eternity. That is why we have size parameter and we have parent. Parent ये खुद का ही parent है, ये खुद का parent है. Similarly this, and every set has only one element like this. इतना थोड़ा थोड़ा समझा अपने को. Okay, there are 3 cities, 0, 1 and 2. Parent is 0, 1, 2, size 1, 1, 1. जीरो कहाँ से आया पिक्चर में? N is कहाँ से कहाँ तक है? Where is N starting? N is from 1 to this. There is no such thing as zeroth city. You need ChatGPT. You need to correct. You need to correct here. N is from this and this, and you mean okay. Let it give all the steps. We can understand other steps as well. I have questions. Me too, bro. I have questions. Hit me up. Abe. It should be like parent 1, 2, 3. अच्छा, अब हमने अलग ही ये ले लिया. ये अपना खुद का एरे है. दिस इज आवर ओन एरे एंड दैट्स व्हाई इट इज 0, 1, 2, 3. ओके, फाइन, माय बैड. If the problem labels node 1 to 3, then you should usually create n plus 1. No, it's fine. 3 is fine. And use and 0 will be unused. Oh, yeah, this is a other way. I have used this type of way in other places. But let's keep it simple. Let's keep it like this. Okay, now back on size. Now back on size, explain me this. For the same 3 nodes, size 1, 1, 1. Okay, size I means how many nodes are there in the set. How many nodes are there in the set whose root is I. Initially every node is alone, so each node has size 1, and this is what we are doing. Size 1 is allocated to each and every one. ठीक है, understood. This part also understood कि union connected cities. We are just traversing on this one like I0, and I stands for like rows and J stands for the columns. So this is fine, and then it's connected. If it's connected, then only we will do union. So union is taking ij parent. What is this parent? And this is the new variable that we are passing, which is size. Yesterday we didn't, and today we are. Okay, so union, yeah, this logic is fine. Root a, int root a is equal to find a parent. Find function is still same. Find function change नहीं हुआ है. Find function is same. This is what the guy was saying, MacDaven. He is not in the chat, so let me pin this guy. MacDaven, come back, buddy. So this is path compression. What the fuck
does path compression mean? I understood this code, but what is path compression means? So let's understand this part of code. Explain me slowly this part, and also tell me what is path compression. Ignore the path compression for a moment. First, understand what is find itself doing. Find is trying to find the parent of that particular node we are passing. So this is we are doing if parent node, for example, is its node, and we see it in the node in the parent array. If it's equal to node, we will just simply return node. That means node itself is the parent of that particular node. Okay. The next is if not in the else condition, parent node is equal to find parent node parent. Okay, we will do this recursively. Okay, this is recursion is going on, which is fine, and then return this. Okay, which is correct. Let me see if the stream is working fine. Yeah. Am I audible? Okay. Okay, this will go like this. So what we will do, we'll just try to understand this recursion. What's the best way to understand this recursion? First, we are sending this node. What is the node that we are sending from here? The node that we are sending is there is a better way for me to understand. I have my own way. So क्या था वो code snippet, code share नहीं. Convert code to image. Which one we were using? Carbon.sh. So let me paste this. Okay, and I don't need this part. I understood this part, so I also don't want this. Copy image. तुमने न जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना मेरे दिल की है जो दास्ता सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, so that we can easily do the dry running over here. Okay, so let me erase this part. This is also not required. Okay, so let's increase its size a little bit. Okay, this छोटा सा size is fine, इतना कि हम पढ़ सके. Okay, this part understood, this part we understood. Going here, let's come to this big daddy.
So for example, what we are passing in the beginning, we are passing, for example, I0 and J0. Ji plus 1. Yeah, same element we don't have to pass, that's why. So I plus 1 is this. Yo bro, how it's going? It's going good, man. How are you? Kitretsu gamer. How are you, macha? Welcome to the stream, guys. क्या है ये नहीं ठीक है. This element, this is 1, but we should ignore this. So this is what we will pass, which is 1, 2. Okay, 1, 2 is being passed. It is 1. It has been passed to here. So A is 1 and B is 2. So root A becomes 1, parent. So what is the parent right now? Parent right now is 0, 1, 2, 3. So parent right now is 0, 1, 2, 3. Is there 3? There is no 3. So only 0, 1 and 2. So these are the parent right now. So 1 and 2, 1 we passed over here to find root A to this function. So right now it is 1 and parent is this 0, 1 and 2. Okay, and then parent node node is 1 equal to 1. Yes, so it will return 1. And then for this one, root B, we are passing 2, so this time it's 2. And 2 is like parent node 2, 0, 1, 2, 2 equal to 2, which is correct. Again it's returning 2. So root A equal to B. No, we'll go here. Smaller tree goes under a bigger tree. This I didn't understand. If size root A, so sabka size is currently 1, so root A size, like size of 1 is less than this, it's false. Else parent root B as in parent of 2 is equal to root A, which is 1. So parent of 2 is 1, correct? And then how the fuck is size changing? Size root A, size of 1 is equal to, it's plus, initial size was 1 plus size of this, so 2, it becomes 2. So what was the size array? It was 1, 1, 1, but it becomes now 2, 1, 1. Okay, so this is the new size now, and the parent array is changed to this 0, 1 and 2 ka parent is 1. So this is the updated parent. Okay, we are able to understand a little bit. It's not going good for me. Why bro? Kya hua? What happened? What's the issue you are facing? Seems like we are able to understand. This part I didn't understand. If root size A is less than size B, then parent of root A is equal to, oh, okay. Okay, I understood now. Let's try to solve next question now. Instead of wasting time here, let's go with the new question. Reopen close tab in number of islands. This was the question. इसमें डायग्राम नहीं दिया, इसमें इसको डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हमने this we solved using last time using DFS. Check all directions, and this is a DFS. So let me see how much the score that we were getting. 4682. Here we got claps, here we got nothing. So let's see. Runtime should obviously increase. So let's these questions, so now I don't even have to read now.
इतना मेरे को पता चल गया, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो we'll read number of islands. So given m cross n 2D binary grid which represents a map, ones is a land, zeros is a water. Return the number of islands. Example this. So in this one, how many islands are there? This is one island, this is completely one island, this is completely one island. Okay, there is only one island, correct? And then in this one there is this 4 का एक island बना, then this का इसका एक island बना, and then this is another island. So there are 3 islands, which is correct. Okay, so we have to do this using disjoint set. It's not going good. What's the problem, Kitretsu bro? ये देख लो कोड, ये बहुत ही मस्त सा कोड लिखा हुआ है मैंने, ये मेरे दिमाग में छप चुका है. So let's erase this now. How many times we have submitted this question? 4 times we have submitted successfully. So one time BFS, one time DFS, one time using simple array maybe, and now it's time for union find. So let me open the basic problem that we did in union find. This we will refer. Okay. So should I convert this to image first, or should I go with the pattern first? Because I didn't understand the complete disjoint, but we will try our best now. Okay, let me keep this aside. Writing tab. बहुत कम जगह है यहाँ पे ना. It feels like Mumbai on my table. So int parent, we need a parent over here, and we will create new int of size n. What is n? We don't have n. So let's create n is equal to grid का size, grid dot length. Okay. So this we created, and then initialize every element with its own parent. Like every element initially will be its own parent. So we'll start it from I equal to 0, I less than n, and I plus plus. Okay, and parent I is equal to I. ये चश्मे से मेरे आंखें दर्द हो रही है ना. Should I change the चश्मा? There are too many lights coming in. Yeah, much better. Okay, and now let's use the size also. So int size नहीं यार, नहीं बीच में चेंज कर, चश्मे को कुछ करना पड़ेगा भाई. Is equal to new int of size n again, and initially we will initialize each and every element of this size equal to 1, because every node is a क्या बोलते हैं उसको, is alone in its own eternity initially. So now we have to iterate. We have to iterate on all the elements. So the loop that we use over here is int I equal to 0, I less than n, and I plus plus. Okay, and then the similar loop we have to write. See, there are 2 ways to write this. Okay, int j equal to 0, we can start from 0 because we need to see if it's the first element is 1 or not. Sometimes it doesn't matter, so we can obviously start with j I plus 1, but this time we will do this and I plus plus. Okay, and we have to see if grid particular I and grid of I comma j is equal to 1. That means if it's a land, then only we will go and do union on this one. And the things that will pass is I comma j comma will send the parent, and we will send the size. Okay, this part is fine. And then we need to find number of islands. So number of islands is like number of provenances. So we will use similarly set of integer. This time we will call it islands is equal to new hatch set, because we want unique values. Okay, and then we will iterate on the parent now. So int I int I on parent we will iterate, and then while iterating we will just
islands dot add will do find the parent of this particular element. So I and parent we will send, so that we will get the unique parents in this, and the number of unique parents means the number of islands we have. That means islands dot size is what we want. Correct? This part is correct. Now we have to write the union function. So public union it will be of type void. We will not return anything from this union. And what all things we are passing: int a comma int b comma int array parent, and then we are passing int array size this time. Int array size. Okay. Hello Tejas bro, how are you, man? Welcome to the stream, guys. I just learned this new concept, DSU. Not even learned, I'm learning this concept. So there were no videos which were helpful. So I thought, let's write the code and understand what the fuck it is. So root a is equal to find this a comma parent comma size भी भेजना पड़ेगा ना अपने को. Size भेजना पड़ेगा क्या find में? Do we need to send the size in the find function? No size. Why there is no size required, man? And then int root b is equal to find b comma parent. Okay, then simply if there are multiple conditions over here. Now size of root a is less than size of root b. Right now I don't understand this particular part, but while writing we will understand. So if this is so, then that means root b ka parent is root a. Root b ka parent is root a. Okay, this is what it means, and we have to also increase the size of root b. We'll do shorthand assignment, and we will add the size of root a over here. Okay, so this is what it is. Else, in the else condition, it is the normal. That means if root a equal to root b, that is what it was, right? So this was parent of root b is equal to root a. So this becomes this, and then size of root a shorthand assignment size of root b. Guys, do like the stream. Don't forget to like the stream. If you guys don't like the stream, मेरे को मजा नहीं आएगा. And then let's write the find function. Public int find int node will pass, and int array parent will pass. This function will be same if this, for example, parent of node is still equal to node. That means the node itself is a parent of itself, so we will just simply return the node stating this is the parent right now. If not, we have to update the parent of node recursively till the time we find the node, find the parent of this node. So we'll pass the parent node over here, and then we will say we'll pass the parent over here. Is it right? Yes, it's right. And at the end we just want to know what is the parent of this particular node. Give me that. So this is what it is giving, and this is fine, and this should work now. There is no syntax error. There is syntax error. Grid I, grid j, index 4 out of bound for typical error. IJ, because it can go it's an m cross n matrix, so I'm fucking stupid over here, taking the first information wrong. So int m and int n.
I usually write it as row and column. It makes more sense. Okay, grid dot length, and then int parent becomes the 2D array now. Row comma column, row comma column. Int size also becomes 2D array over here, and then I'm doing something wrong here. So we didn't. Acha, here. Because it is of size n, that's why. So we need to use the same loops again and again. Okay, so let me first do this. Okay, less than not n, it should be row column. Okay, parent ij and size ij. Okay, this part is correct now. And now similarly this loop will also change. And this time ij equal to 1 and less than row less than column. So now we will hopefully not get that particular error. Okay, यहाँ पे will change this. यार ये तो completely change हो गया यार. Every time every function will have to change, you know. वो परी वो अप्सरा दिल नशी दिलरुबा खो गई फिरता हो यहाँ वहाँ लेके. अबे यार ये फंक्शन मेरे को सही करना पड़ेगा फिर. Let me ask ChatGPT if am I on the right path. Surely it will say this part is wrong. That we have to figure out. So is this part correct? It will surely give us the last two lines are not correct. Last for loop is not correct. Not yet. The direction is right, but there is few important mistakes. Column grid. Okay. Yeah, this is the mistake that I should avoid. Grid dot length is correct, and grid 0 dot length. This should be this. Basic mistake. Then J++. Yeah, that's fine. I'll fix that. Yeah, it is 1 and 0. ये number of islands में ये मस्ती है. This is like not 1. This is this is 1, or to be precise, this is this. This is J++. Okay, I'm doing so many mistakes because of many gray areas. Let me give this part now. Guys, do like the stream. Closer but not correct. Yeah, the main problem is union parent here. I, J are row and column, not two different DSU nodes that should be joined. Okay, it is saying like this. So one more, the big part has been solved. The mystery has been solved, because आगे तो मुश्किल हो जाता ना. ये ऐसे नहीं चाहिए. ये बोल रहा है ऐसा चाहिए. This will convert to star, and this will convert to star. Okay, this is how it should be, and this will be correct now. So I don't have to do this over here. This is fine. So let me ask now. This is how I'll learn.
First blabber out whatever I know and then correct those things, because there is no proper video on this particular topic. Much closer to important things. Wrong. Oh, अच्छा ऐसा चाहिए इधर भाई। ये तो अच्छा मेरे को लग ही रहा था ये रो कॉलम का ये मिस्टेक आएगा। फॉर सिंप्लीफिकेशन यू कैन यूज 1D पेरेंट array of size row comma column। या थैंक्स मैन, 2 मिनट पहले बताते तो मैं ये कर लेता है। अभी मैंने ChatGPT से पूछ लिया, बट थैंक्स तेजस प्रो। एंड टेल मी दिस, it looks like similar to DFS how we used to do। It is exactly what DFS is। Oh, you are making an app, do you need a website? No, I don't need an website, bro। Aditya Mishra, you also stream, I guess, right Aditya? Are you that guy? You are making an app, do you need a website? See, making an app and website is not a big deal to me. Solving LeetCode questions is really a big deal for me. So that app is there. Now that you have mentioned, I need to check the test results now. Yeah, okay, there is one big bug. Nice, that means people are using it, which is fine. I don't need a website. That app is just for fun for me. Like, I was having fun in building that. एक लड़की भीगी भागी सी, ओ सोते ख्वाबों में जागी सी, मिली एक अजनबी सी, थोड़ी आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। I can improvise this part clearly. Okay, but what it's doing, grid, new row, new column, is this int neighbor, new row new row into column plus new column? What is this? What is this? I think I jumped a lot from number of provinces to number of islands. This is clearly not the same code. Explain this part. Explain this part, man. I have lost maybe almost 10,000 hairs since I started doing LeetCode. No sir, I don't stream every app. Every app needs website. Give me 50k, I'll build it. Bro, my job role is full stack developer. Building website is not a big deal for me. It converts a 2D grid position. I'll just need the time I take for solving two LeetCode problems. I'll be able to build the website in that time. ChatGPT gives BFS solution instead of DSU. Right, feeling so. No, it is particularly trained on DSU. Is this how DSU will turn out for this? Now you have raised the doubt, Tejas. Let me clarify on this. Yes, exactly. For grid, DSU usually represents a 1D array, parent array, even though the original data is 2D. Oh, it's a DSU only, bro. This is how. Yeah, this part. See, in the last question, I was doing this. Okay, I did this size, parent, and all. Because it was an adjacency list, I had to do this.
ओके देन फाइंड, ओ आई एम, कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट सेम ही किया था मैंने. So number of provinces, then find function and union function. It was like pretty same, but this time this part is changed. This part. Rest of the part would be same. So what I'll do, I'll just get this code and let's first try and then remove that, and then we will see ki only this part, only this for loop. It needs this directions array as well. The find function and all, if I keep it same, I'll not submit this one, but I'll just try if this works. Yeah, so these two things are new. Rest find and union function is is exactly same, not even changed. So let me undo this. So this is correct DSU, and we will understand this part and write it. Refer शैश कोड फॉर DSU. भाई मेरे को कोई भी रेफरल कोड है ना, मेरे को समझ में नहीं आया ना, मेरे दिमाग में गया है. मैंने कितने सारे वीडियो छान के देख लिए, सब मेरे को शैश कोड क्या है ये. इज अ स्ट्रक्चर्ड इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय शाश्वत तिवारी फॉर मास्टर इन जावा. आदित्य मिश्रा अपना बिजनेस फ्रीलांसिंग करने की कोशिश, विच इज गुड. DSA शीट जावा DS, अबे मेरे को ये सब नहीं चाहिए. मेरे को बेसिक चाहिए कि मेरे को DSA जावा DSA जम टू, अबे जम टू DSA शीट विट सब बेकार है भाई. ग्राफ्स, this is completely Claude code. By looking at the UI I can see this. Yeah, see this is exactly how Claude gives the code. भाई मेरे ये दिमाग में नहीं जाता, मैं अपना खुद से कर लूँगा. No bro, refer his free YouTube video, he is legend. Oh, okay. I tried one legend, I tried 2-3 legends, but कोई भी legend का मेरे को जचा नहीं. YouTube शाश्वत तिवारी. On DSU. यही तो है ना, वो मिलते ही नहीं इन लोगों की वीडियो, कोई मेरे को ढूंढ के दे वीडियो. दिस इज दिस द वन. Hello everyone and welcome back to another video of the समझेंगे. right? इस कंपोनेंट में कोई भी नोट आप भाई ये हिंदी में है यार. जो तो उस कंपोनेंट में उस नोड का अल्टीमेट पेरेंट या रूट पेरेंट बता देगा. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 2 भेजा, मैंने कहा 2 का अल्टीमेट पेरेंट कौन है, तो आपको आंसर ये मिल जाएगा. ठीक है, तो ये टास्क होता है मेरा फाइंड पेरेंट का. अभी इसे डेप्थ में समझेंगे, टेंशन मत लो. अभी मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जब मैं नीचे एक्सप्लेन करूँ तो एक आइडिया होना चाहिए कि क्या करने वाले हैं. ठीक है, रूट ऑफ अ कंपोनेंट फाइंड करेगा. नेक्स्ट होता है हमारे पास फाइंड यूनियन. यूनियन मतलब क्या होता है, फाइंड यूनियन नहीं है. That seems nice. एक्चुअली यूनियन होता है खाली. यूनियन क्या करता है, 2 कंपोनेंट्स को यूनियन कर देता है, मतलब अटैच कर देता है. एंड ऑपरेशन होता है ना यूनियन, तो दोनों को कंबाइन कर देगा. तो अगर आपने कोई नोड इस कंपोनेंट की पकड़ी और कोई नोड इस कंपोनेंट की पकड़ी और आपने कहा इनका यूनियन कर दो, देखिए आप. ब्रो मेरे को हिंदी, see the kind of Hindi these North Indian people speaks is very fast and most of the time it's very different, so कंपोनेंट बन जाएंगे. I have to listen very carefully. आपने इसी सेम कंपोनेंट की 2 नोड्स दी और आपने कहा इसका यूनियन कर दो, 2x is not ऑलरेडी possible. सेम कंपोनेंट में है तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा. तो ये आइडिया होता है यूनियन का. ठीक है, कनेक्ट 2 कंपोनेंट्स.
नाउ यूनियन में भी दो चीजें होती है, आइडर यू कैन डू यूनियन बाय रैंक या फिर यू कैन डू यूनियन बाय साइज। अभी हम सीखेंगे यूनियन बाय रैंक एंड सेकेंड हाफ इस वीडियो की हम सीखेंगे यूनियन बाय साइज। ओके, अब चलो बातें बहुत हो गई, उठा करके सेम कंपोनेंट में इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, फिर मैंने कहा एग्जाम्पल क्या कहता है कि ये जो मैंने बात करी ये क्या है। तो यूनियन मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा यूनियन 0 and 3, तो आप क्या करोगे 3 and We'll solve few questions and then we'll see afterwards. Tejas, thank you, bro. This looks nice. Bro has only 4,000 views on this video. Hey, your comment is here, bro. Tejas 2636. 2 years ago, sir, you are teaching skills and accent of speaking is lit. Thank you, sir. Helped us a lot, and you got a heart from this guy, bro. Your comment is here. What a fucking coincidence. Tejas. Hi. You are everywhere, Tejas. So I've understood this part. I just did not understand this, so I have asked it the question. It converts 2D grid position. Okay, it converts a 2D grid position, new row, new column, into one unique DSU node number. Okay, it just translating all the complete 2D matrix into a single one direction array. So neighbor new row into column plus new column. Example, suppose grid has 3 columns, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Achha, these are 3 columns. For new row 1, new column 2, column 3, we get neighbor 1 into 3, 5. So cell 1, 2 becomes DSU node 5. Yeah, bro, I support legends. So till here it's correct. After this we actually need direction array. So directions is equal to this. Uh, 0, minus 1, 0, 1, 1, 0, minus 1, 0. Okay, this is the direction it becomes. And then in this one, grid I j equal to 1. After this we have to see that now. Yeah, after this we know we need to have this int node. Yeah, I'm just getting this as it is now. Okay, मेरे को int node I comma column j. This is confusing for now. Okay, and then what's the next steps? We have to iterate on the direction. So this we have done 1,000 times. So int direction on directions, and then we usually get new row is equal to what is new row? It should be row comma column, no? I usually take like this, so it will be easier for me to these are all rows, these are all columns. So rows comma columns, rows comma columns, it should be less than rows comma columns, correct? And then this should be instead of int I, oh, this is fine. This should be, because it gives a clear understanding of this, no? So columns, and new row becomes
I plus TR 0 and कहाँ गया, 0 नहीं लिखा, ये वो लिखा, and new column becomes J plus TR1, correct? And then in this one or after, yeah, in this one only, we have to check this row should be less than, see यहाँ पे मैं मार खाता हूँ ना, तो इसको रो करते हैं, this should be row, this should be row, this should be row plus plus, this should be column plus plus, this should be column less than columns, and this should be columns, so it is better readable code. And then row plus plus and column plus plus, and then now we can use the similar logic as DFS that we remember. Row less than 0, column less than 0, okay, और है and इसमें, and this time no, this is not or, this is and column should be less than, because we cannot go out of the boundary box of this particular grid. This row should be less than rows and column should be less than columns, okay, and grid row, grid new row, not row, new row comma new column is equal to 1, okay, this is what the required condition is. And then we will do this shit code that I didn't understand, and then union, and in this one we will pass row comma column. क्या पास कर रहे हैं भाई, यही तो नहीं समझ में आ रहा है, this int neighbor, this is new row यार, this is new row, new column, new row, new column should be hi. Okay, this part has some mistake. New row, new column, still it has some problem. मैंने सब कंडीशन उल्टी लिखी क्या, should be not less than or greater than, what stupid fuck I am, equal to 0, this is fine. Then okay, this is this, and column, this part ij, and this part is wrong, this part, this should be row into columns into column, this was the mistake. New row, yeah, I made the change. तुम्हें लेटेंसी में दिख रहा है क्या सब कुछ, या मेरे को मैसेजेस लेट दिख रहे हैं? Is there any mistake? There is some mistake over here. Let me run this. What is the mistake over here? Line 14.
Okay, that was the mistake. ठीक है. This is fine, and here it will change, right? So यहाँ पे क्या change था? Again we need two loops, and then if grid is 1, this int node, what is this? What is this? Again this shit. Okay, so this I'll just copy it. I'll just paste it over here. I need one more bracket. Okay, and then I need to check one condition. This same condition I need to check. Grid is this. And this thing. रेशमाच्या रेघांनी लाल काळा धाग्यांनी कर्नाटकी कशी बांधी साडीला नका लावू माझ्या साडीला रेशमाच्या रेघांनी लाल काळ्या धाग्यांनी. आई कॉमा जे हमने चेंज किया ना, इसके वजह से वो आई See this new row, and this has become terrible mistake that we did. It should be simple ij. Okay, I was stupid doing this change. Less than rows is fine. This should be I. सब सारी चीजें हर जगह पे नहीं मिक्स करनी होती. So let's keep like this. Every row we have to change now. We will change one by one so that we will not miss anything. This row becomes I, and this columns is columns. Column becomes J. K nahi J. And this is I. This is J. Okay. New row is fine. Deva, Halere Baba. This is fine. This is fine. New row. This is fine. This is wrong. New row. Column, this should be J. This is not CJ, this is J. Here also we will use the same fucking thing. ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था मैं, इसलिए ये मिस्टेक हुआ. It should be simple, same. This is I, this is J. Okay, so it will not cry. Yeah, we are same. Ask ChatGPT for simple 1D parent, then you will get that logic rows. Okay, yeah, I'll do that. अभी बहुत सारी चीजें करनी बाकी है. It's just the first draft of the code. Okay, there is something I fucked up. This function should not be changed. So let me close this. I0, IJ, this this islands dot add. This is what I am doing, correct? This is exactly the same thing I did, didn't I? Tejas is helping, which is nice. ये पार्ट हमने सेम ही किया है. This part is almost same. Okay, here is no mistake. Mistake lies here. New row greater than 0. Correct. New row less than row. Less than rows. Correct. Less than less than rows. New column greater than 0. And new column less than columns. Fine. Perfect. Then this. New column, new row. So what is the mistake over here? I
New row plus column plus this. New row plus column. What was this? Cha. Line number 39. Okay, why it worked earlier? 7.25 runtime. Is this that bad? Does it show these many submits? This is so bad runtime, no? It's already 11 now. Ask for simple 1D parent array, then you will get that logic. It is simple 1D parent array right now. It's the simple 1D parent array. I don't think so it is the correct answer. So let me go and ask Google now, because it seems very wrong. How to solve this in Java using DSU. They are using now rank and all, no? The ChatGPT has set us on the wrong path. We are using size actually, so using माइक की वजह से मैं कीबोर्ड नहीं देख पाता एंड आई मेक मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग. Size array tracks. This union and find is completely different. I'll just give my code. Is this correct? My code actually worked, but it's not efficient. But slowed down. Okay.
give me optimized version of my code. So let's try this. It's still in the same range. So DSU is the worst way to solve this question. हम क्या टाइम पास कर रहे हैं क्या फिर यहाँ? So my this version is still better, like see 46% and 82% with using DFS. We're using this code. So that means DFS is the best way to solve this problem, number of islands. So is DFS the better way to solve number of islands problem? Yes, DFS is the best here. तो बेंचो हम क्यों गलत क्वेश्चन में दिमाग खराब कर रहे हैं? Change this. Submit this. Okay, तो मैं गलत जगह पे घुसा ना. I should have been in this one. Redundant connection is the one that we should be solving. So then DSU is exactly where is it like helpful? Redundant connection. We also solved this. We have solved this using BFS, and for BFS, what's the score? 5 point. Okay, maybe this at this position, this will be better. At least in the memory side, it will be better. Is it? Let me see the other versions that I have. I have only did it using DFS. Oh, sorry, BFS. Acha. Let me ask which questions should I which questions should I solve then using DSU, because this was the worst example for DSU. Literally it was the worst example. So finding perimeter island वगैरह ये सब DFS is better, or in even BFS is better. So 1971 I have solved. 684 is what is 684? 684 is this redundant connection. Okay, so the first principle DFS BFS union find. So the topics they have mentioned is like this is the best approach, then DFS is second best, BFS is third best, and union find like this. संडे के दिन दिमाग खराब कर रहे हैं भाई. Let me watch the video of this guy at least. Same component में insert कर दूँ. When any question requires k times BFS DFS where k is large, then DSU is used. Okay. Let me note down this. Is this correct? For island problem, constraints are small, than DFS is best. Okay. Guys, is the stream boring for you guys? Because yesterday's stream was really good, and today I can see very loose response because I'm solving LeetCode. LeetCode तो solve करूँगा ही भाई मैं. LeetCode daily I cannot do system design and applications, no.
Mostly yes, but I'd phrase it more accurately. DSU is useful when you need to answer connectivity component questions many times, and doing DFS BFS from scratch each time would be expensive. Okay, when DFS and BFS is expensive, that I have to think, and then okay, we have progressed little bit on this one. ठीक We'll है, end फिर with this मैंने कहा video now. यूनियन कर दो कंपोनेंट में, तो आप फिर से डीएफएस लगाओगे या लेट्स से 7। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्राफ सीरीज। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द ग्राफ सीरीज। और ये जो क्वेश्चन है ये कई लोग कई बार आपसे पूछेंगे, इंटरव्यूज में आएगा, ऑनलाइन असेसमेंट में आएगा। तो मेक श्योर कि आप आज की वीडियो पूरी देखो, मे भी थोड़ी लेंदी हो जाए, हिंदी ही है, अच्छा खासा टॉपिक है। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रो के पास पीछे एवेंजर्स का लोगो है भाई, इज एवेंजर्स फैन। डिसजॉइंट सेट, इसे दूसरे वर्ड्स में डीएसयू भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखो बेसिकली ये मल्टीपल कंपोनेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। व्हाट इज मल्टीपल कंपोनेंट? फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल ग्राफ है, ठीक है, ये एक कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है। व्हाई टू कंपोनेंट्स? क्योंकि ये दोनों ग्राफ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। आप यहाँ से किसी भी नोड पे मूव नहीं कर सकते इस ग्राफ की, और ना ही यहाँ किसी नोड से मूव कर सकते इस ग्राफ पे, करेक्ट। तो कभी भी आपको मल्टीपल कंपोनेंट की क्वेश्चंस गिवन हो तो यूजुअली हम यहाँ पे डीएसयूज का यूज कर सकते हैं। बट कैसे क्वेश्चन? अब यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूँ एंड क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन दिस ग्राफ। मतलब मैंने आपको एक सिंगल ग्राफ दिया और इसमें 2 कंपोनेंट हैं, बट ये आप फाइंड कैसे करोगे? जनरली आप क्या कर सकते हो कि आप DFS लगाओ, डेफ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल, किसी भी एक नोड से, लेट्स से आपने 1 से लगाया एंड आपने इसे विजिट कर लिया, इसे विजिट कर लिया, इसे विजिट कर लिया, इसे विजिट कर लिया। कितनी बार DFS लगाया? एक बार, ठीक है। देन आप 2 पे गए, आपने देखा ऑलरेडी विजिटेड, 3 पे गए ऑलरेडी विजिटेड, 4 पे गए ऑलरेडी विजिटेड, 6 पे आए, आपने कहा यार दूसरा DFS लगाते, विजिटेड नहीं है, तो आपने दूसरा DFS लगाया, इसे विजिट करा, इसे विजिट करा। देन आप 7 पे गए, आपके ऑलरेडी विजिटेड, तो आपने 2 बार DFS कॉल लगाई, तो यू कैन से वी हैव 2 कंपोनेंट्स, करेक्ट। बट सेम चीज आप कांस्टेंट टाइम में, करेक्ट, कांस्टेंट टाइम में बता सकते हो यूजिंग डिसजॉइंट सेट। एंड कांस्टेंट टाइम से मेरा मतलब है 4 टाइम्स ऑफ अल्फा। ये क्या है? ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है डीएसयूज की। डीएसयू मेनली होते क्या, अभी हम समझेंगे। देन चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इज 4 रीचेबल फ्रॉम 1? अगेन, क्या 4 1 से रीचेबल है? मतलब आप अगर 1 पे खड़े हो तो क्या आप 4 पे जा सकते हो? अगेन आप सेम काम करोगे, आप डेफ फर्स्ट सर्च लगाओगे 1 से और आप देखोगे। हेलो हेलो यश भाई, हाउ आर यू मैन? कल की तैयारी? कल ऑफिस नहीं जाना क्या? अगर 4 विजिट हो जाता है तो यस, अगर नहीं होता है तो नो। सेम काम आप डीएसयू से कांस्टेंट टाइम में फिर से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताऊंगा, लेकिन देखो कितना ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। देन तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डज 4 एंड 6 लाइन सेम कंपोनेंट? ठीक है, क्या 4, ये रहा 4, 4 कहाँ गया, ये रहा 4, ये रहा 4, डज 4 एंड 6 लाइन सेम कंपोनेंट? अगेन आप सेम काम करोगे जो आपने पहले किया था नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए। आप 4 से DFS लगाओगे और अगर उसमें 6 विजिट नहीं होता तो यू कैन से डिफरेंट कंपोनेंट, करेक्ट। बट सेम काम आप अगेन कांस्टेंट टाइम में कर सकते हो यूजिंग DSUs। तो नाउ यू नो दी पावर ऑफ DSU कि DSU को कैसे क्वेश्चंस में लगाना चाहिए। जब भी मल्टीपल कंपोनेंट के क्वेश्चन हो ज़रूर एक बार कंसिडर करना कि क्या मैं यहाँ पे DFS की जगह डेफ फर्स्ट सर्च, इन्हें कैसी प्रॉब्लम से सॉल्व किया जाता है जो भी डायनेमिकली चेंजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि मेरे पास कोई ग्राफ है और वो बार बार चेंज हो रहा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। जैसे इसकी बात करें तो अभी ये एक स्ट्रक्चर है, लेट्स से 5 आया और 5 इसमें अटैच हो गया। अब आपसे पूछें यार 5 एंड 2 क्या सेम कंपोनेंट में, तो आप फिर से DFS लगाओगे। या लेट्स से 7 आ गया एंड 7 यहाँ भी अटैच हो गया, यहाँ भी अटैच हो गया, तो अल्टीमेटली सेम कंपोनेंट हो गया। फिर भी आपसे पूछे जा रहा है कि अब बताओ। हो जाना चाहिए था अभी तक, पर मेरे दशहरी कॉलेज ने एक साल में एक सेमेस्टर करवाया। व्हाट द फक? मीट पे आ जाओ, आई कैन हेल्प यू विद दिस लॉ। या श्योर, आ जाओ, लेट मी क्रिएट अ मीट।
मैं लेकिन थका हुआ था आज, तो लेट्स डू दिस नाउ. न्यू मीट, इसका यूआई चेंज हो गया है क्या? स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग. आई एम शेयरिंग द लिंक इन दिस चार्ट ओनली. और भाऊ, किसका मीट? This is the URL. Tejas. I was watching this video, guys. LinkedIn पे, अरे भेज जो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है ब्रो. यहाँ पे I can limit the person who is joining. The video I was watching, and apparently Tejas has commented on this particular same video 2 years ago. तू इधर. I have gotten a work from my company जिसके बारे में I have no idea. वीडियो से भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा. It's related to CRM. Okay. So do you have a doubt in CRM or the work? Hello Tejas. हेलो भाई. Hello भाई. आवाज आ रही भाई? Yes, let me see it on Discord. डबल आवाज ना आए. ठीक है. हम्म. You guys can hear Tejas, right? I'll share my screen. Yeah, sure. Let's see. Tejas. तो एक सेकेंड. प्रॉब्लम से स्टार्ट करें या फिर कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँ, ये बताओ पहले. प्रॉब्लम से स्टार्ट करो. प्रॉब्लम से समझना आसान है. एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया? कौन सा प्रॉब्लम? The you should do this problem. मैं बताता हूँ तुम्हें. Number of provinces. You can start with that because that's the last question that I did. Maybe if you can explain it better, I'll understand. मोटिवेटर किधर है पता नहीं. पूरा सिस्टम बनाने बोला CRM का कंपनी के लिए, जोहो यूज करके. ओके, जोहो इज दैट प्लेटफॉर्म मोस्टली पीपल यूज. तो व्हाट्स द प्रॉब्लम लाइक? हाँ, तो प्रॉब्लम है, देयर आर n cities, some of them are connected while some are not. If A is connected directly with city B and city B is connected directly with city C, then city A is connected indirectly with city C. मतलब दिया है कि ए सिटी डायरेक्टली कनेक्टेड है बी से और बी कनेक्टेड है सी से, तो इनडायरेक्टली ए कनेक्ट हो गई सी से. ठीक है. A province is a group of directly or indirectly connected cities and no other cities outside of the group. You are given n cross n matrix is connected where is connected of I equals to 1 means the city I and city J are directly connected. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन तो समझ गया. क्या भाई? हाँ. हाँ, तो तो बेसिकली डीएसयू के सॉल्व करने के लिए दो टाइप है. एक यूनियन बाय रैंक और दूसरा है यूनियन बाय साइज. तो दोनों तो सेम ही है, मतलब बस थोड़ा माइन्यूट 10% डिफरेंस है. तो अपन, हाँ, तो अपन साइज से स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली अपन एक काम करते हैं कि पूरा सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन एक अलग ही क्लास बना देंगे, क्लास डीएसयू. ठीक है. तो अलग क्लास बना लिया. अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि उसके पास उसकी साइज है और एक उसका पेरेंट एरे है. ठीक है. अभी अपन कंस्ट्रक्टर से अपन
एक साइज लेंगे कि टोटल सिटीज कितनी है, ठीक है, और उसको बस इनिशियलाइज कर देंगे कि साइज जो होगी, तो उस साइज का अपन एरे बना लेंगे। इधर लेंथ या कुछ अलग लेना पड़ेगा। ये हो गई साइज और ये हो गया पेरेंट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अभी सबकी साइज तो 0 ही होगी, और अपन पेरेंट सबको सेम कर देंगे कि अपन सबके पेरेंट्स खुद को ही सेट कर देंगे। तो पेरेंट ऑफ ith node will be I only. Yeah. So this is the basic logic. तो इसके बाद अपने दो फंक्शन है, फाइंड पेरेंट एंड यूनियन बाय साइज, ठीक है। अपन मेन में पहले तो इसके रोज और कॉलम्स निकाल लेंगे। तो रोज जो रहे, साइज साइज 1 भी कर सकते हैं या फिर 0 भी रख सकते हैं, किसी मतलब सेम ही लॉजिक रहेगा। 1 भी कर सकते हैं या फिर कोई नहीं है किसी को अटैच तो 0 0 भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अपन रोज और कॉलम निकाल लेंगे पहले। इस कनेक्टेड डॉट लेंथ और इंट कॉल्स विल बी इस कनेक्टेड ऑफ 0 डॉट लेंथ। तो रोज और कॉलम मिल गए। एक काम करता हूँ, मैं इसको ग्लोबली बना देता हूँ, मतलब वो भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी ये इन्होंने क्या दिया है, ठीक है, ये एग्जांपल देखते हैं। 1 और 2 कनेक्टेड है, फिर इधर क्या, सेम सेम ही दिए। क्या दिया है, 1 इज कनेक्टेड इन सिटीज, ठीक है, सिटी डायरेक्टली कनेक्टेड। तो अपन अभी इस ग्राफ को फिल करना स्टार्ट करेंगे। अ, इधर पहले वो पब्लिक वॉइड फाइंड पेरेंट, वॉइड नहीं इंट रहेगा, हाँ। तो नोड और पेरेंट एरे तो इधर मिल भी जाएगा, ठीक है, भेजते हैं। इसको भेजने जरूरत नहीं है क्योंकि ये उधर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वही कंडीशन, इफ पेरेंट ऑफ नोड इक्वल्स टू नोड रहेगा, तो रिटर्न नोड इटसेल्फ, नहीं तो पाथ कॉम्प्रेशन, इसको बोलते हैं पाथ कॉम्प्रेशन। पेरेंट ऑफ नोड इक्वल्स टू फाइंड पेरेंट ऑफ पेरेंट। पाथ कॉम्प्रेशन मीन्स अभी एक बताता हूँ। सपोज अपन ए सिटी है, ए सिटी से बी जा सकते, फिर बाद में बी से सी जा सकते, और सी से डी जा सकते सपोज। तो अपन ने पहले ए और बी का यूनियन किया, तो वो सेम कंपोनेंट में आ गए। फिर उसके बाद बी और सी का यूनियन किया, तो बी और सी एक कंपोनेंट में आ गए। अभी ए और सी को डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, तो अपने को अगर देखना होगा कि ए और सी डायरेक्ट है कि नहीं, तो उसके लिए अपने को पहले ए से बी पे जाना पड़ेगा, फिर बी से चेक करना पड़ेगा बी से सी जा सकते क्या। तो अपने को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा फ्रॉम Okay. ए नोड टू सम इंटरमीडिएट नोड एंड फ्रॉम इंटरमीडिएट नोड टू आवर डेस्टिनेशन नोड। तो अपन क्या करते हैं कि डायरेक्टली ए में ही ऐसे स्टोर कर सकते हैं कि ए में अपन बी जा सकते, सी जा सकते, डी जा सकते। तो इसको बोलते हैं पाथ कॉम्प्रेशन। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि अपन जो पेरेंट जो अपनी करंट नोड है उसमें ही जो आंसर आएगा जो, तो वो वहीं पे स्टोर हो जाता है।
तो ये जो लाइन है ये वाला आउटपुट लाके देती है. ओके, दिस इज मीन्स कॉल्ड पाथ कंप्रेशन. सुपेरियर पेरेंट फाइंड करना, उसको तो बोलते हैं पाथ. अभी नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने बोला कि ए से हम डी जा सकते हैं, तो अपन ए से बी जाके, बी से सी जाके, सी से डी जा सकते, चेक नहीं करेंगे. अपन डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे ए से अपन ये सारे कनेक्टेड है, तो बिग ऑफ वन में, मतलब डीओसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 4 अल्फा बोलते हैं, विच इज वेरी स्मॉल. तो ये एक बेटर सॉल्यूशन है पाथ कॉम्प्रेशन. ओके, तो ये हो गया फाइंड पेरेंट. फिर इसके बाद अपन वो यूनियन बाय साइज. तो यहाँ पे अपन दो नोड लेंगे, नोड 1, नोड 2, मतलब दो कोई भी एलिमेंट जिनको यूनियन करना है. तो बेसिकली एक, मतलब पहले तो अपने को उनके पेरेंट लेने पड़ेंगे जो भी होंगे. P1 फाइंड पेरेंट ऑफ नोड 1, फाइंड पेरेंट ऑफ नोड 2. अपन यहाँ पे चेक करेंगे, अगर वो से मतलब उनके पेरेंट अगर सेम है, तो वो सेम कंपोनेंट में है. तो अपन चेक करेंगे इफ पेरेंट 1 इक्वल्स टू पेरेंट 2, अगर सेम इसमें होंगे तो अपने को उनको मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कंटिन्यू यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा. तो अपने को मतलब इनको यूनियन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ही कंपोनेंट का पार्ट है. और उसके बाद फिर अपन चेक करेंगे साइज, देखेंगे जिसकी बड़ी साइज होगी उसमें अपन ऐड कर देंगे. तो अपन चेक करेंगे इफ साइज ऑफ P1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइज ऑफ P2, तो अपन साइज ऑफ P1 प्लस इक्वल्स टू साइज ऑफ P2. और पेरेंट ऑफ अपन किसको P2 को P1 में डाल रहे, तो पेरेंट ऑफ P2 इक्वल्स टू P1. ठीक है. और इसका एल्स पार्ट सेम कॉपी करेंगे, पेस्ट, इसमें P1, इधर P2, और इधर P2, इधर P1. इतना समझा. बस DSU इतना ही पार्ट है, अगर इतना समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. हाँ, हाँ, हाँ. मैंने फोन पे, ओके, ओके, एक मिनट में फोन पे चेक एक करता हूँ. सेकेंड. नहीं, 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 अभी अभी मैंने म्यूट किया था. ठीक है, अभी आवाज आ रहा होगा. Hello, Atharva. So this part I understood, but when I was trying to do the same on number of islands, number of provinces पे हो गया वो. तो अभी तुम नंबर ऑफ आइलैंड्स कैसे सॉल्व करोगे इससे? बस ऐसे ही बताओ, सॉल्व करके मत बताओ. ठीक है, ठीक है. हाँ. ठीक है, ठीक है. मैं ये वाला, ये कॉमन वाला कोड है, ये कॉपी करता हूँ. नंबर लीड कोड, सेम क्वेश्चन. ये तो BFS वाला ही सॉल्यूशन है, ये बेस्ट है इसलिए. अभी ये वाला DSU का ये सेम स्ट्रक्चर, इसमें सेम यूज करेंगे. जो अभी इसके लिए अपन यूज कर रहे हैं, अभी यहाँ पे तो
सिंगल 1D पेरेंट एरे लिया है और यहाँ पे 2D ग्रेड दिया है। तो जैसा मैंने बोला था कि अपन इसको सिंगल 1D में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं रोज इनटू कॉलम साइज का एक 1D पेरेंट एरे ले लूंगा और सेम साइज का साइज एरे, दो एरे यूज कर रहे। तो यहाँ पे जो अपन ये लेंथ भेज रहे हैं ये होगा रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है। तो हाँ, तो मैं ये ड्राई रन करके ही थोड़ा ये बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन ठीक है। तो अभी अपन ने सेम ये ले लिया और इसको थोड़ा छोटा कर दूं क्या, इसका ड्राई रन थोड़ा बड़ा होगा। तो मैं थोड़े रोज इनटू कॉलम्स कम कर देता हूँ, 3 by 3। हाँ हाँ, अभी ठीक है। तो 3 by 3 मतलब 9 रोज होंगे, टोटल 3 रोज, कॉलम्स होंगे टोटल 3। तो अपन पेरेंट एरे बनाएंगे, इसको मैं बना रहा हूँ। साइज इसकी होगी कुछ तो भी नहीं, इंट ऑफ 9, और सेम साइज एरे भी होगा 9 साइज का। तो ये एक रफ हो गया। फिर उसके बाद सेम अभी इनको मैप करना है बस 2D एरे को 1D एरे में। तो सबसे पहले अपन ने रोज इनटू कॉलम्स अपने मेन फंक्शन को भेज दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो वो वाला साइज एंड पेरेंट एरे इनिशियलाइज हो गया। अपन ने सबके पेरेंट सबको असाइन कर दिए। ठीक है। और सबकी साइज इनिशियली 1 है। सेम पाथ इधर फाइंड पेरेंट अगर सेम होगा तो अपन वही नोड रिटर्न कर देंगे, नहीं तो पाथ कॉम्प्रेशन फॉलो करके अपन पेरेंट फाइंड करते रहेंगे। और हाँ, मैं फोन पे भी स्ट्रीम ओपन कर लेता हूँ, फिर मुझे वहाँ स्क्रीन दिखेगी आपकी। लाइन नंबर लाइन 19। नंबर 19, यस। हाँ हाँ, वो वाला एक्सप्लेन करूँ। तो सपोज अभी यहाँ पे टोटल 3 रोज 3 कॉलम्स है। तो अपन अपने को सपोज ये इनका अपन मैट्रिक्स कैसे 0 1, सॉरी 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, ये 2 0 2 1 2 2। ठीक है। ये बेसिक इंडेक्सिंग हो गई। अगर अपने को ये वाला एलिमेंट देखना है जो 1,1 इंडेक्स पे है, तो इसको अपन कैसे ला सकते। तो वो उसके लिए अभी ये कहाँ पे फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो अपन क्या करते हैं, कौन से रो में है वो, फर्स्ट रो में है। ठीक है। और एक रो में कितने एलिमेंट्स है, 3। और वो कौन से कॉलम में है, फर्स्ट। ठीक है। तो इसका ये टोटल आ गया 3 × 1 3 + 1, वो फोर्थ एलिमेंट है।
तो ये इसको 0th एलिमेंट पकड़ लो, इसको फर्स्ट एलिमेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और ये आ गया 4th एलिमेंट। तो ये हो गया मैपिंग कि 2D एरे की मैपिंग 1D एरे से कर दी उन्होंने। ओके, एक और एग्जांपल लेके बताओ, समझा मेरे को थोड़ा, एक और एग्जांपल लेके बताओ, मे बी हाँ, तो लास्ट। अपने को सपोज ये लास्ट वाला लेना है, ये लास्ट वाला, ये 2,2 पे, ठीक है, 2,2 पे अभी अपन कौन से रो पे सेकंड, और रो की हर रो में कितने एलिमेंट्स है, 3, और अपने को कौन से कॉलम वाला देखना है, सेकंड कॉलम वाला। तो ये हो गया 3 × 2 6 + 2 8। अपन 0 से अ, ये वाला लॉजिक पता है कि अपने को ये निकालना होता है, अगर क्या बोलते हैं उसको, मॉड्यूलो यूज करते हैं अपन। सपोज क्या, डिस्टेंस। इसको एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, लेट मी थिंक ऑफ एग्जांपल। ओके। एक क्वेश्चन था कि लीड कोड का एक क्वेश्चन है कि अपने को फाइंड अ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन 2D मैट्रिक्स, कुछ तो भी सर्च एलिमेंट इन 2D। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पहले करो, इसमें वो लॉजिक समझ जाएगा। हाँ हाँ, तो ये वाला लॉजिक बोल रहा हूँ, ये मॉड करते हैं अपन। तो इसमें ये समझा, ये वाला समझा तो मैं पहले, तो इसका ही लॉजिक वहां पे यूज किया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक 2D मैट्रिक्स दिया है, और ये जो है ये सॉर्टेड है, रो 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 कॉलम वाइज। तो सारे एलिमेंट्स अगर अपन ऐसे ये सीक्वेंस में लिखेंगे 1 3 5 7 10 11 16 20 23 30 34 60, तो ये सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे अपन बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो बाइनरी सर्च के लिए अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि अपने को 1D एरे चाहिए और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट चाहिए। यहाँ पे उन्होंने सॉर्टेड वाला तो दिया है, बट 1D नहीं दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट अपन करते कि टोटल रोज और कॉलम्स का निकालते। पहले टोटल रोज निकाल लिए और कॉलम्स निकाल लिए। तो एक सेकंड, तुम्हारी आवाज गई। अभी आ रही है सही हाँ से? हाँ, यस यस। हाँ, तो सपोज ये वाला एग्जांपल के साथ अपन ट्राई रन करते। तो हम्म। यहाँ पे टोटल 3 रोज एंड 4 4 कॉलम्स, कॉलम्स, यस। 3 रोज 4 4 कॉलम, कॉलम्स, तो टोटल होगा ये 12। 12, यस। ठीक है, तो अपन बाइनरी सर्च के लिए सेम करते, एक स्टार्ट लेते, एक एंड लेते, स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स हम्म। एंड एंड फ्रॉम लास्ट लास्ट लाइक टोटल लेंथ -1। ओके। ठीक है, एंड बाइनरी सर्च की ये बेसिक कंडीशंस, व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड। तो यहाँ पे ये इसको सिंपल ये लिख सकते हैं, मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। मैं ये इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये जो है इसमें डिवाइड बाय ये जो है ये एकदम फास्ट होता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी थोड़ी अच्छी है, ये ओके। लाइन नंबर 14 की। ओके। इसको ये सिंपल ये भी लिख सकते। हम्म। तो इसके बाद अपन ने अपन अभी हेलो ट्राई बादल। रन करेंगे। तो या। अपना स्टार्ट है 0, एंड है 11th, ठीक है, एंड 0 + 11 11/2, तो ये आएगा कुछ 5। 5। या। तो अपना मिड आ गया 5। 5। अपने 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 को अभी पता है कि मिड एलिमेंट 5th इंडेक्स पे होगा, बट अपने को 2D जो मैट्रिक्स है उसमें 5th एलिमेंट कौन सा है वो पता नहीं।
तो अपने को बस रो कॉलम्स पता है, तो अपने को ये मिड को रोज एंड कॉलम्स में कॉलम्स में कन्वर्ट करना कन्वर्ट करना पड़ेगा। है। ओके ठीक है, तो इसके लिए बस ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। जो अपना जो ओके मिड इंडेक्स 5, आया है हाँ मिड इज 5 उसको and columns is 3, columns is 4, so या 5 by 4 is 1 here, 5/4 will be 1 and modulus of and 5 by 4 is also 1, 5 mod 4 will be 1. 1, so 1 comma 1, सो 1,1, तो फिर यहाँ पे वो जाके चेक करेंगे 1,1 पे कौन सा है, 11। 11, 11, तो इस 11 और टारगेट, तो यहाँ इसमें टारगेट 3 है, टारगेट दिया है 3। 3, हाँ तो अ, तो करंट एलिमेंट इज 11 विच इज ग्रेटर देन टारगेट। तो अपना जो टारगेट है वो होगा लेफ्ट साइड में, करेक्ट। यस तो ये वाली कंडीशन हिट करेगी और एंड होगा मिड -1, ओके करेक्ट। ओके यस तो अंडरस्टूड। मिड आया था अपना 5, तो अभी मिड होगा 4। तो मिड हो गया, एंड हो गया समझा समझा मेरे स्टार्टिंग। को, यस। हाँ, तो फिर से वही मिड निकालेंगे, 4/2 मिड आएगा 2, 4/2। फिर से वही, सो यहाँ पे फिर से रो कैलकुलेट करेंगे, 2 डिवाइड बाय कॉल से अपने 4, तो ये आएगी 0, और 2 mod 4 ये आएगा 0, 2, oh तो sorry 0, 2 2 2, 2 2 yes 0 1 2, तो ये आएगा 5। इस 5 इक्वल्स टू टारगेट नहीं है, तो फिर से यही कंडीशन हिट होगी और यस अपना ग्राफ से चल रहा है भाई। मिड जाएगा अभी फिर से 2 -1 1 पे। तो अभी स्टार्ट है बादल 0 ग्राफ पे, से चल रहा है एंड है एक्चुअली, 1 पे। बट आई एक्चुअली तो गॉट फिर स्टक से ऑन वन 0 + प्रॉब्लम 1 डिवाइड बाय, एंड तेजस इज एक्सप्लेनिंग मी नहीं ऑन दैट, ये जाएगा 2 पे शायद। so this was वो the लास्ट problem, मिड था 2। हाँ करेक्ट है। even though I तो did it फिर से but वही he होगा, was trying to फिर से explain me. लूप रन होगा, और इसके बाद रो कैलकुलेट होगी, तो रो आएगी 0, और ये आएगा डिवाइड बाय 2, और ये आएगा डिवाइड बाय, सॉरी, ये आएगा डिवाइड बाय 4 ही, 1/4 एंड 1 mod 4, तो ये आएगा। तो 0,1 पे जो है 3, इज इट इक्वल टू आवर टारगेट, यस, देन इट Yes, विल रिटर्न 2। बस यही वाला लॉजिक okay, यूज मैं किया है मैंने। I'll try this problem now, before that now 74 करके देखता हूँ मैं, मेरे को समझा तेजस। ओके ओके। ठीक है भाई। तो यहाँ पे वही लॉजिक यूज किया है। But it is not an ideal solution. DSA is not an ideal solution for this problem. हाँ, Number of वो जो islands. नंबर ऑफ आइलैंड जो है क्वेश्चन, Hmm. उसके कंस्ट्रेंट आई थिंक लेस देन इक्वल्स टू 50 या कुछ तो भी होगी। Number of islands के कंस्ट्रेंट number of provinces के, अच्छा number हाँ of islands के। हाँ, ये देखो 300 ही है। तो यहाँ पे इसलिए वो Better है DFS DFS. BFS, या Why so? Can you explain if possible? If the constraints are less, why DFS is better? तो अभी Yeah. सेम एग्जांपल, सपोज वो कनेक्टेड सिटीज चेक करने हैं, तो सपोज A कनेक्टेड टू B कनेक्टेड टू C कनेक्टेड टू D, ऐसा ऐसा है Z तक। तो अपने को हर इसमें एक क्वेरीज एरे दिया होगा, सपोज Okay. क्वेरीज एरे, और क्वेरीज एरे में ऐसे मतलब इनफाइनाइट क्वेरीज होंगे, या फिर कुछ मान लो 10⁵ क्वेरीज Okay. टोटल, और अपने को सबके आंसर्स निकालने, और उसमें
क्वेरीज में दिया होगा कि सिटी 1 से सिटी 2 का जा सकते हैं या नहीं, ये इसका ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो अपने को हर क्वेरी के लिए डीएफएस रन करना पड़ेगा या बीएफएस रन करना पड़ेगा। ठीक है, यस तो बीएफएस और डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर एक एक डीएफएस या बीएफएस की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टोटल वी प्लस ई, टोटल जितने एजेस है और वर्टेस है इतने, और टोटल में अगर मैंने बोला क्वेरीज की साइज अगर 10⁵, 10⁵ टाइम्स ये इतना हो जाएगा, जो कि टीएलई दे देगा। ओके समझ रहा है? यस यस और और यही अगर अपन ने प्री कंप्यूट करके स्टोर कर लिया, जो डीएफएस स्टोर करके रखेगा 4 अल्फा में, तो बाद में कोई भी क्वेरी आए सिटी 1 से सिटी 2, वो बिग ऑफ वन मतलब 4 अल्फा को बिग ऑफ 1 ही कंसिडर करो, तो बिग ऑफ 1 में वो बता देगा कि सिटी 1 से सिटी 2 जा सकते या नहीं जा सकते, सिटी एक्स से सिटी जेड जा सकते या नहीं जा सकते। तो दिस इज आइडियल फॉर दिस सिचुएशन ओनली। ओके समझा, अंडरस्टूड यस। थैंक यू मैन। वुड यू लाइक टू शेयर योर प्रोफाइल दिखा सकते हो तुम्हारी लीड कोड की? प्रोफाइल आई एम बैकल अथर्वा, बैकग्राउंड इंडियन डेवलपर। इंडियन डेवलपर सभी लोग हैं। Almost 1200 questions you have solved. Tejas Bore say, where are you from? Would you like to turn on your camera or no? bro, not now. I'll Okay, share next time. like later on. Yeah, next time. 1200 question. How much time you took to solve these many questions? टाइम तो 2024 के 28 मार्च से स्टार्ट किया है। Okay. एकदम डेडिकेटेडली स्टार्ट किया। यू लाइक डेली हाँ, सॉल्व कर रहे थे? अभी कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो? व्हाट्स द करंट स्टेटस? अभी मैं जावा फुल स्टैक डेवलपर हूँ एक्सेंचर में। ओके कितने टाइम से? अभी रिसेंटली मैंने टीसीएस से यहाँ पे स्विच मारी है, मतलब ओके अभी 2 महीने ही हो गए बस। ओके एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट टू मी? तुमने देखा है मेरे को सॉल्व करते हुए। आई एम जस्ट एट 100 क्वेश्चंस राइट नाउ। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि मेरे को क्या करना चाहिए? हाउ शुड आई प्रोसीड? तो मतलब मैं तो इतना ही बोलूंगा कि जो भी है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर डीएसए शीट वगैरह ऐसा कुछ फॉलो करने की जरूरत तो है नहीं। जो अपने को रैंडमली आ रहे वही मैं फॉलो करता हूँ। मैंने ना स्ट्राइवर की शीट फॉलो की है। हाँ, वो एक सैश कोड जो मैंने बताया वहां से मैंने सीखा है, और मैंने उनका तो लिंक्डइन पे भी डाला था कुछ, तो भी तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई भी किया था। बाकी मैंने भी लिस्ट बनाई है, जो मेरे लिस्ट सेक्शन में यहाँ पे भी मैंने सही सही क्वेश्चन डाले जो नीचे। Just a second, guys. I'll just finish the talk with him, and I'll be back. I'll answer the chats. Yeah. And you are graduate from HGGS college, right? या एजीजीएस नांदेड़। HGGS Nanded. You are from Nanded. Are you from Nanded? नो, आई एम फ्रॉम छत्रपति संभाजीनगर। Okay. HGGS is like I live near HGGS. I'm from Nanded. Nice. तो ये मैंने बेस्ट क्वेश्चन स्टोर करके रखे हैं। Okay. तुम्हारे ये लिंक शेयर करना तेजस, LeetCode तेजस बोर से। URL दे दो, ठीक है? I'll just look at it. But it's Yeah. nice. You have solved 1200 LeetCode questions. कुछ फायदा हुआ? ये चीज बताओ कि इंटरव्यूज में कभी फायदा हुआ इस चीज का कि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? हाँ, मतलब अभी तो मैंने उबर का दिया था, जो कि बहुत ज्यादा हाइप हो गई थी, मतलब 80 LPA कुछ पैकेज था। ओके तो मैंने मेरे सारे डीएसए राउंड्स क्लियर कर दिए, एलएलडी क्लियर किया, एचएलडी क्लियर कर दिया, बट कम्युनिकेशन वीक था इसलिए एचआर राउंड में रिजेक्ट हो गया। ओ अभी मैंने बताया था मेरा अमेजोन का भी चल रहा है, अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। ये वाला मैंने पोस्ट शेयर की थी हाँ मैंने अमेजोन देखा था वाले। ये। यस
शायद देखा है मैंने। तो अप्लाई तुम्हारा प्रोसीजर क्या है, करंट प्रोसेस क्या है तुम्हारा, हाउ डू यू अप्लाई टू दिस कंपनीज? तो मुझे ये मैं तो मतलब एक प्रॉपर रिज्यूमे बना लिया है। पहले तो जो भी रिज्यूम का भी एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, ओके। उसमें कोई इमेजेस नहीं होनी चाहिए, उसमें टेबल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, उसमें जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट कॉपी हो जाने चाहिए। मतलब जो मैंने जो फॉलो किया है, तो उसमें वो बोलते हैं कि जो एआई जो होता है वो टेक्स्ट लेता है और टेक्स्ट से वो मैचिंग कीवर्ड्स चेक करता है। तो अपन अगर इमेज डाल दिए, इमेज में कुछ भी लिखा है उसको इमेज समझ नहीं आती। तो उसको उसके लिए ये और एक वेबसाइट है employ.me ये करके। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ, यस दिख रही है। ये employ.me करके। ओके। यहाँ यहाँ पे जाके रिज्यूम स्कैन वगैरह करना, यहाँ पे जो भी स्कोर आएगा वो वाला फैंग कंपनीज के लिए बेस्ट रहेगा। ओके, एंड फ्रॉम वेयर यू एक्चुअली अप्लाइड टू दिस कंपनीज, लाइक फॉर एग्जांपल उबर को कहाँ से अप्लाई किया था? उबर को मैंने उनके करियर साइट पे अप्लाई किया था। ओके, एंड फॉर अमेजोन? अमेजोन का भी करियर करियर पोर्टल पे ही। ओके। करियर पोर्टल पे ये होता है जो मतलब मोस्टली। उबर का तो मुझे वेट लिस्ट आया था बाद में, और फिर वेट लिस्ट के बाद उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया। ओके, but it's nice that you went till the last round in Uber. I made new video today. We'll look at that. मेरे भी एक BGMI के इन गेम फ्रेंड का नाम भी तेजस। अच्छा, which year are you from? कौन सी? He has experience, 2 years experience you have, I'm guessing so, Tejas? आई एम Huh? रिसेंट पास आउट 2025। Okay, so 1 year experience now. हाँ। तो मेरी थोड़ी क्या बोलते टीसीएस में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो तब मेरे पास थे ऑफर्स, बट मैंने वो छोड़ के टीसीएस ज्वाइन किया, विच वाज माय वेरी रॉन्ग डिसीजन। Okay, तो वहाँ जाके मुझे नॉन टेक्निकल रोल में असाइन कर दिया था, तो मेरा पहला स्विच लेस देन ईयर में ही पड़ गया। okay, it happens. हाँ, तो अभी तो मुझे प्रॉपर जो अभी है एक्सेंचर में प्रॉपर जावा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट पे अभी सही से काम चल रहा है। Okay. एंड हाउ ऑफन डू यू अप्लाई ऑन दिस साइट्स, मतलब करियर साइट्स पे जा जाके अप्लाई करते हो या कैसे है तुम्हारा प्रोसेस अप्लाई करने का? ये देखो कितने बार रिजेक्ट हो चुका है वो, कितने बार, तब जाके एक मतलब इतने बार एक बार मतलब फुल अटेंड कर चुका हूँ मैं। तब मेरे को डीए से कुछ नहीं आता था, तब कॉलेज लेवल पे था, ओके। रिसेंटली स्टार्ट किया था, तब रिजेक्ट हुआ था। अभी ये सेकेंड टाइम आया है, तो यहाँ पे रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। मैं मेल पे फॉलो अप लिए जा रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। देर इज तेजस, आई टेल यू वन थिंग, जो मेरे दोस्तों ने बताया गूगल वगैरह में जिन्होंने अप्लाई, कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मत शेयर करना यहाँ पे गलती से। नहीं यहाँ पे कुछ हाँ, तो जो ईमेल का रिप्लाई है ना एचआर का, वो रिप्लाई नहीं करते, बिकॉज यू हैव टू गो एंड एक्चुअली सर्च फॉर द टीम्स इनसाइड ना, जहाँ मतलब फॉर एग्जांपल अमेजोन के अंदर जो टीम्स है उसमें जाके तुम्हें कोई टीम से बात करनी पड़ती है। मतलब कोई टीम देखो वहाँ पे ओपनिंग्स है क्या, एंड देन उनको बोलो कि कैन यू टॉक टू योर एचआर कि वी नीड दिस ओपनिंग वी हैव इन आवर टीम एंड कैन यू गेट दिस गाय। तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होने के बाद भी ये चीज़ करनी पड़ती है। मैंने सुना है बहुत जगह से, गूगल में होता है ये, अमेजोन में होता है। तो अभी ये रीच आउट सिलेक्शन होने वही के करना बाद भी पड़ेगा। तुम्हें मैंने करना पड़ता है। बहुत बार फॉलो अप्स डाले, 4-5 फॉलो अप डाल दिए, कुछ रिप्लाई नहीं। एक काम करो, लिंक्डइन पे तुम बात करके देखो, कोई जो जिस ऑफिस के लिए तुम्हारा होने वाला था सिलेक्शन, उस ऑफिस में देखो लिंक्डइन पे सर्च करके कोई है क्या, उनको कोल्ड मैसेजेस करो 10-12 लोगों को।
एंड सी क्या प्रोसेस, बिकॉज इसके आगे का प्रोसेस डिफरेंट है, ये ओपन नहीं होता प्रोसेस इतना. हाँ मतलब मेरा जो था वो क्या बोलते मतलब टाइलेंट क्या बोलते वो प्रेशर लेवल वाला था ना, तो टीम असाइन नहीं हुई थी, इसलिए कोई किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता. नहीं, लिंक्डइन पे कर सकते हो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ टीम असाइन होना ही ज़रूरी है. अगर कोई टीममेट ने बोला कि मेरे टीम में एक जगह खाली है, तो एचआर को जाके बोलेगा कि तेजस को ले लो, या कोई भी बंदा जो है अभी, तो वो तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड नाउ, तो वो तुम्हें असाइन कर सकते हो उस टीम में, ऐसा होता है. मेरे दोस्त के साथ गूगल में ऐसा हुआ था, ही फेस द सेम थिंग गूगल के, उसने सारे राउंड क्लियर कर दिए थे, वो बता रहा था मेरे को. एंड बाद में उसको कहीं से पता चला है, बैंगलोर में था, तो आई कैन गेट हिम ऑन द कॉल, ही कैन टेल यू कि क्या प्रोसेस होता है ठीक उसके है, बाद. क्योंकि मैं वैसे लिंक्डइन पे एक्टिव रहता हूँ, तो वही कर लूंगा अभी फिलहाल तो. हाँ, वो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक टाइम के बाद वहाँ पे. ठीक है, बट इट वॉज गुड टॉकिंग टू, अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया, थैंक यू तेजस फॉर दैट, एंड ऑल द बेस्ट इसके टू बाद यू. बताओ. नेक्स्ट टॉपिक ये भी बता दो, अगर हम्म. आपको ग्राफ इसके बाद करना है तो इसके बाद होता है कनेक्टेड कंपोनेंट्स करके टॉपिक है. ओके. उसमें एक अल्गोरिदम है, कोसाराजू अल्गोरिदम करके. अगर कौन इसके सा बाद वो कर लिया तो कौन आपका सा एल्गोरिथम? कोसाराजू अल्गोरिदम करके. तो आपने पहले क्या बोलते ग्राफ ग्राफ क्या ये आपको पता चल गया, फिर उसको इन डिग्री आउट डिग्री पता चल गई, फिर उसके ट्राइवल्सल बीएफएस डीएफएस पता चल गया, फिर उसके बाद आपने डीएसयू कर लिया. डीएसयू के बाद लास्ट है कनेक्टेड कंपोनेंट्स, और उसमें है कोसाराजू एल्गोरिथम. अगर ये इतनी चीजें जिसको आ गई उसको पूरा ग्राफ आ गया, और वो फैंग लेवल के लिए रेडी हो जाता है. ओके, ठीक है भाई, चलेगा. तुम्हारा लिंक्डइन भी दे दो, आई विल कनेक्ट, मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ. ठीक है, चलो, थैंक यू तेजस, चलो भाई, थैंक यू सो मच. चलो, अच्छा लगा बात करके. सेम है, चलो, थैंक यू, चलो बाय. बाय बाय, थैंक यू. गुड नाइट, यस. Yes, back to the text messages. कहाँ पे थे हम? He has an experience of 1.5 years almost. Imagine getting rejected. He did not get rejected, bro. He got selected. He got rejected in the last communication round somewhere. Yeah, he wasn't rejected in DSA round. Yes, referral मिला नहीं. Will we get a video of this? I don't think video क्यों निकालूँ इसमें से. We'll see. ब्रो मुझे अमेजोन का रेफरल दिला दो, ऐसे नहीं मिलता यार. मैं नहीं होता क्या वहाँ पे फिर? ब्रो तुमने बिना रेफरल का अप्लाई किया? यस, ही शोड ना कितने बार ही अप्लाइड एंड ही गॉट रिजेक्टेड, तो वी हैव टू डू द सेम. थॉरफिन रेफरल मिला क्या? मुझे भी चाहिए. कोसा राजू अल्गो फॉर फाइंडिंग स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टेड. ओके, क्या नाम है? मैंने this is something strongly connected components. Okay, I'll read about this. कौन है ये तेजस? तेजस is he joins the stream regularly, and he was like, I was struggling with one concept, so he came up and he said, I'll explain to you, and I shared the Google Meet and he joined, so he is one of us. Okay, chalo, it's almost 12 now, and we should end the stream. अथर्व was saying, मैं बाथरूम से मैं पढ़ रहा था, कहाँ गया अथर्व का मैसेज? 10 मिनट्स में एंड करके आया. Right now I'm in washroom, just ended the stream. It landed up very wrong. Tejas working guy. Yes, Tejas is a working guy. I made a new video, by the way, about that little
fucker of teacher who slandered me when I was in 3rd grade. या तुम्हारा देख लेते हैं ना एक बार. How would I search your channel now? Search में आएगा क्या तुम्हारा channel? यश मिश्रा ऐसे नहीं आएगा ना चैनल में तुम्हारा. Give me the video link, no? Hi. लिंक दे दो. यश ऐसा तो नहीं मिलेगा ना, वो छोटे चैनल सर्च में नहीं आ पाते जल्दी से. आज स्ट्रीम पे क्या हुआ? आप साइबर से पढ़ रहे? साइबर से नहीं पढ़ता यार मैं. उसका वीडियो में देख रहा था बिकॉज मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें. लेकिन उसने कोड बताया नहीं, एंड तक नहीं बताया उसने मेरे को, तो उसका पसंद नहीं आ रहा साइबर का. तो मैं खुद से ही ये कर रहा हूँ, चैट जीपीटी से पूछ के. तुमने कहा डिस्कॉर्ड पे भेजा है क्या? ओके. Okay, so I gotta tell you guys a story. This is from when I was in 3rd grade. So I was at the back of the class chilling with my friends before the geography period. Nothing special, just a normal regular day. Then, in a few minutes, our geography teacher came in. He had a stack of notebooks in his hand, like both hands full, walking in all serious. He came inside, we all greeted him and then sat down. He put the notebooks on his desk and then he said, "Who is Yash? Please stand up." Now, I was a decent student. I used to get good grades. So obviously everyone including me thought, oh, I got a good grade this time too. That's what this is. So I stood up proud, smiling. And then that bastard, he said, everyone please clap This for question him. called in Java. Well, you might be wondering why I'm slandering him. Let me continue. And I'm like, oh, तुम्हारे जो माइक नीचे रख रहे हो ये सब आवाज आ रही है उसमें, पता है यश? तुम्हारी आवाज दब रही है बाकी सब आवाज के आगे. You should come be on. little more louder. बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा है अभी. It's not a big deal, you know. I'm embarrassed but happy. And then that fucking shit, he says, I have never आज मेरे स्ट्रीम डेंजर लोग आ गए थे स्क्रिबल के टाइम, एडल्ट थिंग्स. जस्ट टेलिंग यू सम सजेशंस. मैं भी ऐसे वीडियोस बनाता था लेकिन आई यूज्ड टू डू इट इन मराठी बिकॉज मैं भी स्टोरीज वगैरह लिखता हूँ. seen such a horrible handwriting. Can you fucking believe it? Which year are you from? I'm a working guy, man. I have almost 5+ years of experience now. That bastard. How dare he? I had never faced such humiliation before. In front of the whole class, clapping for the wrong reason. Thinking I did good, and then, nope. Just my ugly handwriting. So even after 10 years, I still harbor the same disgust for him as I did then. How long is this video? Fuck that guy. Anyway. 2 minutes. Okay, so I gotta tell you guys. मेरे को ये वीडियो तुम्हारा ज़्यादा अच्छा लगा था ना. ये आवाज़ कहाँ गया ये? This one. Okay, so do you know what happened with me today? Before that, just know I'm an undergrad student and I recently landed an engineering. If you have some B-roll videos ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा. But it's nice. So you work full time and also stream. Which company are you from? I was from Slumberger, SLB. You can check out my LinkedIn. He's from 1950.
1932 if to be precise. I thought I should talk in Indian accent. No, you continue what you are doing, bro. This is nice. This kind of genre is here bit different. If you can add some B rolls and all, I used to do this thing if I can. If I have those videos, तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा. Because I'm from Mumbai and we used to do theater, and there we used to have like say stories in between जो भी plays होते थे ना theater में, तो उसमें थोड़ा बोलना पड़ता था. So that's how I used to came up with the stories, because we have to keep the audience hinged during the blackouts as well. And do I have this channel? Shit. मेरा स्ट्रीम एंड ना हो जाए भाई ऐसे. हाय. Motivator Divines practicing communication. Yeah. Ritesh Raghav, Rohit bhai, I need a help if I am starting to learn backend dev in Java project based learning. Where can I start? Learn from or how? Bro, just pick up some core Java concepts first. Okay, at least learn till the syntaxes and all, basic syntaxes, variables and all, and then side by side start doing LeetCode, basic LeetCode questions. So that is where it gets really helpful. And then once you are at a certain level, maybe after 10-15 days, then you can start with some basic projects, जो भी मतलब एकदम mini project, to do the coding practice, you know. Instead of I strongly suggest someone, instead of watching videos or tutorials or lectures, it's always good to start coding, start doing some practice. So छोटे projects you can create. You will get a good understanding of that. If you already have experience in other language, then it's better to directly start coding without taking much of a help with AI. Bro, what's the tough of the day? What's the tough of the day means? Even I need to focus on communication. Yeah. What's the thought of the day? There's no thought, bro. Thought of the day would be like how to kick McDonald out. I'm just joking. You want to switch? Not really. I'll tell you, my goal is I want to leave this IT industry. Like, I want to leave the corporate world. I don't want to work for someone else. That is my goal, is kind of a retirement I have to take. You should focus on cocoa bananas. कुछ तो नया ही बताता है भाई मैकडॉन. Yeah, bro, that's a good problem. I can solve it in less than 5. Oh shit. Storytelling kya? Then what will you do? Bro, I just wanted to learn Java. Java समझ लो. 31st month. Java समझ लो, and then वही मेरा goal था. Build something. I was building an app that is good. I'll give some interviews in Java as well. I'll try to get some job in Java. That's not an issue, but ज़्यादा दिन के लिए नहीं करूँगा, मिल भी गया तो. Already doing DS in Java, but how can we code if we don't know how to build, bhai? Bro, if you can code, if you are doing LeetCode already in Java, then basic console applications, so at least you can build. Correct? I'm following this book if that's helpful to you. Head First Java, इसका PDF भी मिल जाता है. So because my core Java has some gaps in the concept, so that's why I was doing this. So you can refer to any book as well. बिल्ड करने के लिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, रितेश राघव.
यू जस्ट पिक एनी स्मॉल कंसेप्ट, चार्ट जीपीटी से पूछ के तुम्हारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है फिलहाल, एक कोई भी छोटा सा कंसेप्ट ले लो, ठीक है, एंड बिल्ड ऑन दैट. मे बी छोटा सा कंसोल एप्लीकेशन क्यों ना हो, ट्राई प्रैक्टिसिंग ऑन दैट ना. बेसिक कंसोल एप्लीकेशंस यू कैन स्टार्ट विथ. Ranting, yapping and storytelling too. Always see what Yash is doing. Try it is something like your piece of work should be out there somewhere on the internet, so that someday somebody can see it, and maybe it can open a new opportunity to you. So in the world of internet, we should always have a imprint somewhere on the internet, and continuous imprints, not like once in a blue moon. Every other guy thinks of the same thing, leaving the corporate world, and they end up staying. I have already created another sources of income, bro. So at this point also I can leave. But I can still work, so that's not an issue for me. Why if men, women, wala, etc. Your teacher did the right thing. Why I can explain you this and also revise some concepts. Sure, man. Next time I'll send the Google Meet and then you can join. हरामी पढ़ाने के जगह सब करता था. टीचर को कभी गाली मत दो, bro. Are you planning to run your own startup? Not startup exactly. I just jumped into this application building and all, so I'll try to do that. YouTube is something there. I have some things running in the background, not this channel, but the ones which are monetized. I have automated all those stuff. मेरे को अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उस पे. So that is there. Then I have invested in multiple markets: US, Dubai, Indian market. So that is also there. Are you planning to run your own startup? Startup का भी देखते हैं. Startup का भी ऐसा कुछ है नहीं plan, because it takes so much of energy and all. I'm not in that level in my life to dedicate that much of energy in something. This channel can become another thing. Thank you, bye, got it. Yes, just practice, bro. Simple console application. See, कोई तुम्हें किसी को दिखाना नहीं है सब कुछ काम ना, छोटा भी हो तुम सीख रहे हो, that is enough for you. I made 2 American friends and one of them is a C++ engineer and the other is pursuing masters in philosophy. हो 2 अलग अलग टाइप के दोस्त, लेकिन मैंने उन लोगों को पेल दिया स्ट्रीम पे. काफी लोग थे. करना पड़ता है कभी कभी. And his name John Cena. Man, the code in your window is of path compression union by size, which I was talking. Yeah. See, bro, मैं तुम्हें बताता हूँ. The thing that you were saying yesterday. We can solve this question without size. The question that we solved yesterday, which was the number of providences, without using size also we can solve this. That's what I did. But because you told me there is a path compression something, so this line is already path compression line, जो अपने code में थी, but we used by size now. So that's how I improvised on this. It improved the code a little bit, not much, but I tried to do same with the number of islands problem. And इसका response is very bad because we should not do or use DSU for this problem. It should be solved using DFS, which I already did. So I was trying with another approach. So yeah, size is there that I learned because you told me. Rest of the things are fine as it is. तुमने जिस हिसाब से मेरे को कल बोला ना, no, this is wrong. You say no when none of the line is matching with the actual. That means I'm not on the correct path. I was on the correct path, just it needed some tweaks. Only one line tweak. You said no, which is wrong. Oh no, master in philosophy, Indian मजदूर. तुम्हारा सिटी तो 20-30 लाख.
and you were missing that in the DSU code yesterday. Bro, without that side, मैंने तुम्हें दिखा है कल का कोड रन करके ब्रो. इट वर्क ना, इट वर्कड विदाउट साइज. कहाँ है कल का कोड? नंबर ऑफ प्रोविंसेस. सी दिस वाज यस्टरडेज कोड. यहाँ पे साइज है नहीं है ना? यहाँ पे साइज है बट पाथ कंप्रेशन है. सी इट वर्कड वेरी वेल. जहाँ पे साइज चाहिए वहाँ पे हम यूज करेंगे. अभी मेरे को इतना आइडिया नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पे. Union by rank is also simple. Just compare both code of rank versus size. 90% same. Okay, we'll do that. Abhi we just started yesterday only on this one, this concept. एक दो दिन और देंगे तो अच्छा हो जाएगा. Tejas, are we connected on LinkedIn? I want to see your profile. Can you share your profile, Tejas? Bro, so didn't I said I was saying wrong because your DSU template was incomplete, not your code for that specific problem. We can solve DSU like this was the very basic question. Size की ज़रूरत नहीं थी उसमें. Subsequent question need size and all, size और rank. फिलोसफी वाला इतना क्रेजी बंदा, वो एक दिन ओमेगल पे गया और वहाँ पर एक आदमी आया जो, और ये सारे उसको 1 घंटे तक फिलोसफी का साइज इज यूज इसलिए करते हैं सो हमेशा जो सब ट्रे बड़ा होता है उसमें ज्वाइन होता है. ओके, इसको स्किप क्यों नहीं किया और इसको इतने ध्यान से सुन क्यों रहा था? कभी कभी ये फिलोसफी में बैठ जाता है. Tejas says, I have messaged you on LinkedIn. No, I didn't got any message, bro. Tejas, मैसेज नहीं आया मेरे को कोई. Let me share my profile here so that you can text me. Maybe you are texting some wrong guy. Yes, bhai, you got the job. Yes, you got the job, bro. You are a god. This that mid girl. Am I pronouncing it right? That mid girl. What's your name, bro? भाई yes, he got the job. तुम्हें तो HTML CSS JS करा था, right? 0 DSA. बताओ भाई यश अभी. Yes, I got the text. या हमने बात किया हुआ है पहले से. Bro has pasted his LeetCode profile as the background, as the cover image of LinkedIn pages. Senior web developer Pragna HGS non-read full time.
Nice. डीएसए भी किया है और नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस, मोंगोज, प्रिज्मा। अच्छा, हाउस द जॉब? डीएसए उतना अच्छा नहीं, पर स्टार्टअप नहीं पूछते। हाँ, सारी कंपनीज नहीं पूछते डीएसए इतना, थोड़ा थोड़ा ही पूछते। 50-60 तो होगा। बताओ भाई, उसको उसको पर्सनल में जाके बताओ। यश, चलो गाइस एंड करें स्ट्रीम को। किसी को कुछ दिखाना है? वी कैन सी। अबे कीड़े कहाँ से आ रहे हैं साला? Next code. Hello, hello. I guess I'm late. Nobody is late, bro. You are on time. Guys, kindly like this stream. We have solved only one question today, but it was a very informative stream. Make sure you like the stream. उससे भी कम वो बेले की परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ता। एसएस निंजा से तो can you do a resume review? I'm a third year student. Instead of doing resume review, you send me your resume on LinkedIn, and I have I'll give you a very good क्या बोलते हैं उस पे, a document, a review document, so that the things you can change and tweak in that, based on the different sessions I have joined. I have created a skill in that. Okay, so I have a skill based agentic AI, and that reviews the resume very well. So it had the inputs from the people who are already working in Google, Uber, Amazon. So based on the pointers that they have given, the agent works on that. So you can text me your resume on LinkedIn and I'll give you the review. सैलरी स्लिप एड्रेस दो तो सैलरी उसका ही अकाउंट दे दो भाई। यश, अथर्व का अकाउंट दे दो। चलो एंड करते। आई होप तुम्हें ये मराठी समझ में आता भाई। मैंने भी ये बहुत मस्त सा स्टोरी लिखा हुआ था कॉलेज टाइम पे, बट इट्स इन मराठी। मैं तुम लोगों को सुनाता मराठी में। This is the actual question that we should solve. उत्कर्ष भंडारी। Okay, I'll give you after the stream. मैं तुम्हें देता हूँ। Utkarsh bro, I'll give you after the stream. Currently learning Gen AI, will mention later in my resume. अथर्व कौन है? अथर्व इज अ मॉडरेटर @motivator the divines, उसका @ है। ओके, आई हैव सेंट। यस, क्या बात है। मी पण मराठी आहे। आई नो यू आर मराठी। रोहित कौन है? फिर रोहित कौन है भाई? रोहित कोई नहीं है यहाँ पे। और ये दारू की बोतल का नाम किसका है भाई? मैकडॉवेल नंबर 1।
लेकिन यार ये बुक बहुत ही अच्छा है, मेरे को मजा आ रहा है ये पढ़ने में ना। बेसिक है इसमें, बेसिक चीजें, लेकिन पता है देर आर गैप्स इन द अंडरस्टैंडिंग, जो गैप्स किताब ही सॉल्व कर सकती है। तो इसको पढ़ने में इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बुक, दिस बुक पढ़ने में मजा आ रहा है। सोते समय उठने के बाद आई एम रीडिंग दिस। I said Tejas, I'm from Nanded, so you should know, you should have known that I'm also Marathi. With salted peanuts. चलो एंड करते हैं स्ट्रीम, बहुत ज़्यादा बकचोदी हो गया। Bro, have you studied from Telescope? कॉलेज टाइम पे आई यूज टू वॉच टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ने ही जिंदगी बनाई हुई है भाई। अगर टेलीस्कोप जैसे लोग नहीं होते तो पता नहीं कॉलेज कैसे ख़त्म होता। वे बैक, वे बैक। चलो, इट्स गुड। गुड नाइट एवरीवन। यस, गुड नाइट एवरीवन। काम के कारण मेरी पोएट्री ने आत्महत्या कर लिया। एक बंदा बोल रहा था टेलीस्कोप बेकार है, बेसिक्स पढ़ाता है। भाई बेसिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ही टीचर्स एवरीथिंग। मेरी क्या बोलते हैं उसको, एकदम डेप्थ से। अरे किसी ने लाइक बैक ले लिया यार, भैंचोद ऐसा सब मत करो। हाँ, थैंक यू। एक बंदा वो, ब्रो ही हैज सो वास्ट नॉलेज, हैट्स ऑफ टू हिम। यस ब्रो, या दीज पीपल आर रियली गुड ब्रो, गुड स्किल टू लर्न फॉर फ्रेशर्स। यस, कभी कभी उसका कोर्स किया है। चलो भाई चलते हैं, बहुत हो गया टाइम पास। गुड नाइट, वी चेंज द सीन। Good night all, and keep joining, keep solving the lead code, keep doing the projects, keep learning, and hope you all get some good placement, जिसको जो चाहिए वो मिले। Good night all, and Utkarsh, I'll review your resume after that and I'll give you a detailed document on that. उसकी आंखों में कुछ, आंखें जिसकी नहीं, उस टेलीस्कोप की आंखें देख के तुम्हें क्या करना है भाई। मैंने लाइक बैक लेके वापस डिसलाइक भी कर दिया। थैंक यू मैकडॉन ब्रो। Good night, Tejas. And thank you, Tejas, for teaching us, for explaining us, and for letting us know the interview experiences as well. It was nice talking to you. Say thank you. Thanks to Tejas, bro, जिसने भी सुना। Okay, चलो, take care.